Let us continue, children. It was connectivity issue. In between, it is stopped. Okay, we were talking about that one difference, one point I had kept on hold. Like I always ask frequently, how many of you want to study in government school, and how many of you want to continue with any private school like your own school, Serena Centennial School, and none of you opt for government school. Like in my previous class, also I had asked. Anyhow, the difference we are talking, remember, we are discussing this point why many workers in organized sector lost their jobs post NEP, post new economic policy. I will take you back up right from the beginning. You know, when we got independence in 1947, the economic condition of India was in very dilapidated situation condition, and whatever resources we had, Britishers had squeezed out all the resources, and we were left with almost nothing. And all the figures showing economic development or societal issues, they were performing very much poorly. For example, literacy ratio was very poor. I think 10 is to 90 means only 10% people were literate, though definition of literacy in India is very basic. Then longevity means life expectancy was also very poor. Means on all parameters, India was performing very much poorly. So with the help of 5-year plans, government of India decided to achieve progress in different fields. And first 5-year plan, which started in 1951, as the word suggests, 5-year plan, it was meant for a duration of 5 years. So 1951 first 5-year plan was meant for focusing upon agriculture. Second 5-year plan, which began in 1952, it focused upon industrial development. And it was the time during second 5-year plan, which started from 1952, uh, many more factories they came up, so many iron and steel factories, then locomotive factories, cement factories, and many more factories. uh, Foundation stone was laid down during that particular time. It was the time when Bhakra Nangal Dam project was initiated. Miss, why I am telling you that with the help of these 5-year plans, Government of India started improving its financial situation, financial condition. And at that time, maximum stress was given upon public sector, यानी गवर्नमेंट जॉब, सरकारी हर चीज का सरकारीकरण जिसको बोलते हैं, यानी कि प्राइवेट सेक्टर को बहुत डिस्करेज किया गया. You listen to me each and every line very much carefully. Here I am talking about 1950s and 60s and 70s, something like that, initial decades soon after independence. At that time, प्राइवेट सेक्टर को बहुत ही डिस्करेज किया गया. उनको बहुत लो समझा जाता था. कि they are simply thinking about minting money, and simply they are thinking about how to exploit the workers and how to maximize the profit. Therefore, private sector was kept aside and maximum stress was given upon public sector. यानी बिल्डिंग बनाना है, रोड बनाना है, रेलवे ट्रैक, just to lay down railway tracks, और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना है, like your electricity generation, whatever sectors were there, whatever economic activities were there, they were put solely into the hands of public sector. And what point I discussed, you may remember that I used one sentence that according to my opinion, among so many benefits, the most important benefit of public sector is job security. Do you remember? Few minutes earlier, I had used this sentence. So what happened, since देयर वॉज प्रीवलेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर, यानी गवर्नमेंट जॉब का, चाहे वो सरकारी ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, हॉस्पिटल्स हो,
रेलवे हो, एयरपोर्ट हो, जहाँ कहीं भी हर जगह आपके वो सरकारीकरण जिसको बोलते हैं, हर जगह गवर्नमेंट जॉब वाला गवर्नमेंट का ही होल्ड था। और चूंकि गवर्नमेंट जॉब में देर इज जॉब सिक्योरिटी, slowly slowly it means government job or government sector, it became synonym to corruption and you can say like lethargic attitude of workers. उनको मालूम था कि उनका जॉब सिक्योर्ड है, कोई उनको निकाल नहीं सकता है जॉब से, तो दे वेर नॉट परफॉर्मिंग, दे वेर नॉट गिविंग देयर बेस्ट इन द वर्क प्लेस। और धीरे 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 क्या हुआ, डाउनफॉल स्टार्टेड टेकिंग प्लेस। आप खुद समझ सकते हैं, अगर आपका क्लास है 40 मिनट्स का, आई एम गिविंग एग्जाम्पल, और अगर टीचर आके 40 मिनट्स या 35 मिनट्स भी मान लीजिए अच्छे से नहीं पढ़ाते हैं, मान लीजिए टीचर आते ही नहीं है, आए भी तो बस थोड़ा इधर उधर 2 4 5 मिनट बात किए चले गए, तो what will be the output, what children will learn, what they will study, for the purpose they were coming to school, it is not going to be fulfilled. So similar thing happened with all the government offices, whether it was railway or hospital or banks or whatever sector was there. तो slowly slowly क्या हुआ कि प्रोडक्शन काफी गिरने लगा, चाहे वो फैक्ट्री का प्रोडक्शन हो, ऑफिस में फाइल्स का को डिस्पोज ऑफ करना हो। मान लीजिए एक दिन में अगर कोई कायदे से काम करे और 100 फाइल निकाल ले एक असेट ऑफ वर्कर्स, और वहां 5 फाइल भी नहीं निकल रही है, मीन्स के फाइल्स आर पाइल्ड अप, यानी कि काम दम स्टक होके जमा होके रह जा रहा है, इट्स नॉट मूविंग अहेड। तो क्या हुआ कि लाइफ और इकोनॉमी स्टार्टेड कमिंग टू स्टैंड स्टिल। एंड वन मोर थिंग, जैसे जस्ट टू इंक्रीज द वरी, एक और प्रॉब्लम हमारे साथ क्या हुआ, इंडिया वॉज लैकिंग पेट्रोलियम बैडली। तो पेट्रोलियम नहीं मिलने के कारण हमारे देश में उसका खुद प्रोडक्शन नहीं होता था, माइनिंग उसकी ड्रिलिंग नहीं होती थी, देन वी हैड टू import it from foreign nations, and you know petroleum is one expensive item. तो आप दोनों तरफ का सिचुएशन देखिए, एक तरफ कंट्री में ज्यादा पब्लिक सेक्टर होने के कारण बहुत ज्यादा आउटपुट नहीं था वर्क फोर्स का, लेबर का, वर्क फोर्स का, ऑफिशियल्स का, दे वर लेथार्जिक, करप्शन अपने पीक पर था। तो एक तरफ तो ये प्रॉब्लम, और दूसरी तरफ क्या है कि लॉट्स ऑफ मनी वाज स्पेंट जस्ट टू बाय पेट्रोलियम। तो सिचुएशन इतनी बुरी होती चली गई कि अपने रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को वर्ल्ड बैंक से और आईएमएफ से लोन लेना पड़ता था। लोन लेते लेते लेने के बाद फिर उस पर इंटरेस्ट चलता था, फिर हर साल वो लोन बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है। एंड एट वन पॉइंट ऑफ टाइम सिचुएशन वाज सो वर्स्ट that World Bank and IMF, they decided not to give a single penny to India anymore, and only on one condition they agreed. It was a time of late 80s. Late 80s आते आते तक situation was so gloomy, so dark. Then again, finance minister or whoever was decided by government of India to go and approach World Bank and IMF. When they reached there, simply they denied, and they asked only on one condition: any further loan will be provided if you will change your policy. And this policy culminated in the form of NEP, New Economic Policy, which led towards LPG. अब वापस आते हैं इस वाले पॉइंट पर कि क्यों वर्कर्स को अपना जॉब जो है वो लूज करना पड़ा, इसीलिए हम इतना ज्यादा एक्सप्लेन किए, क्योंकि इसमें एक टर्म है आपका जी, ग्लोबलाइजेशन। What is globalization? In the process of globalization, there is integration of national economy with those of world economy. अब ये इंटीग्रेशन कैसे होगा, हमारे कंट्री का, इंडिया का इकोनॉमी और वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेट कैसे करेगा, ये इंटीग्रेट करेगा थ्रू द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी, थ्रू द हेल्प ऑफ वर्क फोर्स,
थ्रू द हेल्प ऑफ मनी, जिसको हम लोग एफडीआई बोलते हैं, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट,